Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical and derivatives update. If you see in yesterday's session, it was a more of a lackluster trading session with the Nifty trading in a very narrow range of 100 odd points. And if you see Nifty face resistance near 18,400 zones, 18,400 zones. But from those levels, it's again retraced back, and from those levels, it again retraced and traded in a very narrow range of 7081. But on the sectoral front, if you see, then it was largely driven by metals, realty, and IT, and auto stocks traded on a positive bias. While on the, if you see on the flip side, FMCG and PSU banks are witnessing a profit booking session. If you see on the daily chart, then a few stocks like Hindalco, Tata Motors, Grasim, Lupin, and IndusInd Bank were keeping up the pace, while Dr. Trading, ITC, and Coal India mounted pressure on the index. If we are seeing the Nifty consolidating in a narrow range, and it would be consolidating for more in the further week, we expect in the intra-week correction that should be an opportunity to be bought. And secondly, if you see in the Bank Nifty was also trading in a sideways mode, and it was trading near the 42,000. It's just barely able to hold those levels. And if you see, then on an advanced decline ratio was also on on a negative side with 7 on the gear, losing in the 5 on the gaining side, mostly led by the PSU counters and followed by the big ICICI Bank. But only Kotak and Bank of Baroda were able to gain strength in the index. And overall trend is still bullish, but if we see, then any break above 4400, 42,400, 42,500 will again gain some momentum in the index. So on the derivatives front, if you see, the Nifty futures had witnessed long unwinding to the tune of 2%, which saw the decline of 2.45 lakh shares, and the PCR also declined from 1.12 to 1.03 levels. On the options front, if we see, then 18,000 puts saw 75 lakh for OI, while on the call side, we see then 18,500 also saw added some pressure. So that would be the zones where Nifty could find some support in the resistance. On the Bank Nifty futures front, there was again a long unwinding in the index to the tune of 6.5%. That is the sign of 2 lakh for odd shares, and the PCR also dropped from 1.16 to 1.04. On the stock specific front, if you see, then there were 3 long build-ups. That is an About India, that is with 24%, UBL with 20%, and LTI with 15%. And on the short side, if you see, then Sun TV added 29%, RS was added 15%, Alchem with 14%. On the FIS stats trend, if you see, then FIS on the cash end, they've added 1,089 crores worth cash, but DI also added 47 crores of cash. And on the futures front, if you see, then they had shredded their positions a bit of 7,000 contracts. So their net long position stand by 36,000 with a net long short ratio at 60%. On the SGX front, if you see in the today morning, it's opening with 55 points higher. So we are expecting a flattish kind of opening only. Then let's see that the market stabilizes. If we able to go over 18,400, then 18,500, 18,600 would be in a quick succession. So, and on the call front, if you see, we had added a call in Godrej CP, that is in the buy in the range of 845 to 835 with a stop loss 794 and a target of 947. So that's it from mine. I'll hand over to Varun sir for research updates. Thank you. Thank you very much, Hitendra. So a couple of result updates. First on Dilip Buildcon. So company has reported 17% above estimated EBITDA. So this was driven by improved EBITDA margin at 12% versus 8% quarter on quarter. Execution of projects which did not have price escalation clause. Due to execution of these projects, margins have been relatively weak compared to last 3-4 quarters. DBL expects margins to further recover as 95% of legacy order is executed by 1H FY23. In line with our expectations, DBL guides EBITDA margin of 12 to 13% for FY23 and 14% for the second half. Order book of 263 billion provides visibility of 3 times TTM revenue. Net debt is reduced slightly in Q2. Further reduction of 4 to 5 billion is expected, driven by asset monetization in FY23. We retain our EPS estimates and target price of 263 rupees with a hold rating. Key catalyst for stock remains uptick in margin and enhancement of InvIT units. Next update is on IRCTC. So IRCTC has reported revenue decline of 5% quarter on quarter to rupees 8 billion. EBITDA also declined 5% to 3 billion. EBITDA margin expanded moderately 19 basis point to 37.8%,
which is roughly 38%. And consequently, net profit declined 8% quarter on quarter to 2 billion rupees. The weak performance on revenue was due to sequential decrease in revenues of rail near. So there was 14% decline in rail near, 14% decline in tourism revenue, and 5% decline in revenue from catering. Internet ticketing revenue remained flat on quarter basis. In terms of profit, internet ticketing continues to dominate the profitability of IRCTC. Tourism reported operating loss of rupees 55 million. However, tourism EBIT margins increased from 6.3% in Q1 23 to 8.3% in current quarter. Ticketing business operating margin reduced to 83% from 84.5% in previous quarter. In long run, we expect company's revenue and profitability to improve. We are reviewing our numbers to factor Q2 performance and will release note post interaction with management. Our previous rating on the stock stands by. Our next update is on PNC. So PNC reported a 12% year-on-year increase in revenue, 13% rise in EBITDA, EBITDA margin at 22% versus 19% quarter-on-quarter. Year-on-year, there is flat. There has been neither margin expansion or contraction. A net profit of rupees 1.1 billion, 13% rise year-on-year. So KNR Q2 PAT came in line with our estimates. Revenue increase of 12% year-on-year, and EBITDA increase of 13% YOY is positive. We understand that OFC saw weakness in 1H FY23, stood at rupees 2.4 billion versus 1.1 billion in 1H FY22. Weakness was on account of pressure on working capital. In October 22, company has divested balance 51% stake in KNR Tirumala and KNR Shankaram Pet projects, 100% stake in KNR Sri Rangam to Cube Highways. We have buy rating on the stock. KNRC post result conference call is scheduled on 15th November, which is today at 4 p.m. So we'll release a detailed note post the call. Next update is on PNC Infratech. So PNC's PAT was lower than our estimates by 21%, but in line with consensus. Lower than our estimated number is driven by lower execution, which we sense is seasonal in nature. In Q2 23, PNC has no early bonus completion booked. Revenue decreased in the quarter by 3%, and EBITDA margin largely stable at 13%. PAT decline was lower at 3% YOY due to lower interest and depreciation charge. Operating cash flow was strong at 1.4 billion rupees, driven by recovery of receivables in first half of FY23. Stock trades at 9 times FY24 EPS. We have a buy rating due to strong order book and expectations of pickup in execution in the second half. So post result conference call, which is scheduled today, we will be releasing a detailed note on the company. So that's it from my side. Over to you. Over to you, madam. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. First on the L&T Infotech and Mindtree. L&T Infotech and Mindtree have received approval for the merger from NCLT and will start operating as a merger entity on November 14th. So combined entity called LTI Mindtree, so thus become a fifth largest IT service company in India in terms of current market capitalization. The two companies had announced their merger in May 2022. So L&T Group Chairman A.M. Naik said the merger has been approved by both the Mumbai and Bangalore benches of the National Company Law Tribunal in two separate orders. So next update is Alembic Pharma. So a company has received approval from the US health regulator to market cyclophosphamide capsule, so which is used in the treatment of different kinds of cancer in the American market. So this is a positive for the company. The company has received a product which is generic version of Himka Pharmaceuticals.
Next update on Infosys BPM, the business process management arm of Indian IT services firm, launch a unit of artificial intelligence AI and automation in Poland's Lodz city to assist global clients. So basically, the unit in a collaboration with IBM will use AI and automation to offer solution for automation, lowering cost and productivity and customer experience. So basically for the assist global clients. Next update, as per the government data, India's annual wholesale price index inflation for the month of October 2022 is to 8.39 year on year in a single digit and the lowest since March 2021. So it helped by the fall in economical, it helped by fall in commodity prices as per the data. So decline in the rate of inflation in October 2022 is primarily contributed by the fall in prices of mineral oils, basic metals, then fabricated metal products and except machinery and equipment, textiles and other non-metallic mineral products. Next update on Adani Port. Adani Port and Special Economic Zone announced it's setting up the joint venture company with Gadot Chemical Terminal Limited in Israel. So the company has incorporated joint venture company with Gadot Chemical Terminal Limited in Israel. So namely Mediterranean International Ports ADGD Limited on November 13, 2022. Next update on Apollo Tyres. Apollo Tyres reports its numbers. So consolidated net profit increased by 11%. Company reported net profit 194 crore in the second quarter. The tire major had reported net profit 174 crore in the July to September period in the last fiscal. So revenue from the operation this fiscal was 70% up. So 5,956 crore. Last year, same quarter, 5,077 crore. So 70% up. Next update on Biocon. Biocon also reported its number. Consolidated net profit declined by 11% and 168 crore report in the second quarter. Bangalore-based firm has reported net profit last year 188 crore in July to September quarter in this previous fiscal, and revenue from operation rise to 2,320 crore. Then next update on SpiceJet. SpiceJet also reported its numbers. So companies basically reported widening net loss of 837.8 crore. Then excluding forex loss and airlines net loss stood at 577.7 crore in the last quarter. So next update on NMDC. NMDC metal player posted 62% fall in its consolidation net profit and report consolidation net profit 885.65 crore. And last year same net profit is a 2,339.58 crore. So it's almost 62% down. Then next update on Brigade Enterprises. Consolidated net profit company report 52 crore. And revenue second quarter for this fiscal is stood at 912 crore. Next update on Stride Pharma Science, that is Star. So this company is also reported numbers. So consolidated net profit is a 33 lakh in the second quarter, and same July to September period last year, a company is reported net loss of 168 crore. Next update on DCM Shriram Industry, a company, sugar company posted a sharp decline consolidated net profit, that is 93 lakh during the second quarter of this fiscal. Next update on MTNL, the state-owned telecom firm reported widening loss of 737 crore on the standalone basis. Company has registered the same same period last year ago, reported a loss of 653.21, and the total revenue declined by 23.5%, 220.21 crore. And then few other updates. Bharat Forge also reported its quarter two results. So consolidated net profit declined by 67.28% and report 124.79 crore in the September quarter. Revenue from operation increased by 28.95%, 3,076.38 crore.
Overall total expense of the company is increased by 39.2%, 2,885 crore. EPS has company also declined to 3.13 in the quarter to financial year 23. Company declared an interim dividend of 1.5 rupees per equity share. The next update on the Grasim industry also reports its number. So company report 1.5% year-on-year fall in standalone net profit. So 964.30 crore. So bottom line was higher than expected pool. So revenue from operation rise nearly 37% year-on-year, and net revenue from operation report 6,745 crore. So EBITDA for this quarter is increased by 19.4% year-on-year and report 956.61 crore, but margin contracted by 206 basis point. So fall in margin was due to sharp rise in input cost and other expenses. Then some few other updates. India's largest bulk tea producer posted a net profit of rupees 130.76 crore in the September quarter. Indiabull Housing Finance also reported the numbers. The private lenders posted a net profit of 289.4 crore in the quarter to financial year 23. And consolidated income was also almost flat, 2,229.7. So that's it from my end. Now I will hand over to Vijay sir for Hindi update. Thank you and over to you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईआरसीटीसी के न्यूज के साथ। आईआरसीटीसी के नंबर्स आए हैं तो रेवेन्यू उनके गिरे हैं 5% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एबिटा के जो मार्जिन है वो भी 5% से गिरा हुआ है। बेसिकली हमने देखा है कि आईआरसीटीसी में जो उनके जो रेल नीर है उसके उसके वॉल्यूम ग्रोथ में 14% से डिक्लाइन हुआ है। टूरिज्म बिजनेस में भी 14% से डिक्लाइन हुआ। कैटरिंग बिजनेस में 5% से डिक्लाइन हुआ। और जो उनका जो इंटरनेट टिकटिंग जो रेवेन्यू जो मिलता है वो भी क्वार्टर पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल थोड़ा सा प्रॉफिट्स और उनके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये जो एबिटा का जो लॉस की जो फिगर्स है वो 55 मिलियन 55 लाख के करीब है। तो ओवरऑल ये जो डेटा के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा आईआरसीटीसी से प्रेशर मेंटेन रहेगा। फंडामेंटली हमारा ऐसा बाय व्यू है जिसका टारगेट पे 804 का है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली बाय है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर इसमें हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो न्यूज अपडेट है वो है एलटीआई और माइंट्री के इसके मर्जर के ऊपर। इसको अप्रूवल मिल चुका है 14 नवंबर को। सो अभी ये दोनों ही मर्जर काफी स्ट्रांग है। तो दोनों के इंडिविजुअल बिजनेसेस है। तो दोनों के कंबाइन होने के बाद ये 5th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन जाएगा और इनके ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग है। तो होगा कि ये आगे शायद मार्केट में ये डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो दोनों के लिए पॉजिटिव न्यूज है। इंडिविजुअली दोनों ही अपने अपने ऑर्डर बुक्स के साथ काफी स्ट्रांग नंबर्स दे सकते हैं आने वाले दिनों में। अगला न्यूज है एलेम्बिक फार्मा के ऊपर। उनको भी अप्रूवल मिला है ये यूएस हेल्थ रेगुलेटर फॉर कैप्सूल्स बनाने के लिए। ये नॉर्मली कैंसर्स के रिलेटेड ये कैप्सूल्स है। तो ये एक न्यूज पॉजिटिव हो सकता है एलेम्बिक फार्मा के लिए। इंडिया के डब्ल्यूपीआई के नंबर्स आए मंथ ऑन मंथ जो 8.39% ईज हुआ है और 8.39% ईयर ऑन ईयर देखा गया सिंगल डिजिट में। सो बेसिकली ये फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस और ये बता रहे हैं। सो प्राइमरीली ये जो हुआ है ये मिनरल फॉल इन प्राइस ऑफ मिनरल ऑयल, बेसिक मटेरियल्स, फैब्रिकेटेड मीट प्रोडक्ट, expected machinery and or equipment, textiles or non-metallic mineral product, ये सब कैटेगरी में डिक्लाइन देखने की वजह से ये डब्ल्यूपीआई के डेटा में आपको थोड़ा सा राहत देखने को मिला है। इसके बाद एक अपडेट है अडानी पोर्ट के ऊपर। अडानी पोर्ट ने इजराइल में एक कंपनी को उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है गैबॉट केमिकल टर्मिनल्स, जो उनका मेडिटेरियन इंटरनेशनल पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये उन्होंने 13 नवंबर को किया हुआ है। तो ये एक जो उनका जॉइंट वेंचर है शायद अडानी पोर्ट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज साबित हो सकता है।
अगला अपडेट है अपोलो टायर्स के ऊपर। अपोलो टायर्स के नंबर्स आए हैं। सो नेट प्रॉफिट उनका इंक्रीज हुआ 11% के हिसाब से 194 करोड़ उनका सेकंड जो क्वार्टर एंडेड सितंबर का प्रॉफिट्स था। तो ये डोमेस्टिक सेल्स और प्लस इंटरनेशनल सेल्स दोनों को ही अकाउंट करते हुए ये नंबर्स आए हैं। सो द और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 174 करोड़ से जुलाई सितंबर पीरियड के लिए। सो ये अच्छे नंबर्स है। तो हमें लगता है कि अपोलो टायर्स में आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्पाइस जेट के नंबर आए। स्पाइस जेट ने लॉस बताया है 837 करोड़ का। ये लास्ट 3 महीने के लॉस है। तो ये वन ऑफ द रीजन वो बता रहे कि फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़े उसके चलते उनको ये लॉस देखने को मिला है। सो और प्लस उसको वो ये भी बता रहे कि फॉरेक्स के लॉसेस भी है। तो ओवरऑल नेट लॉस उनके उनके बुक्स में 577 करोड़ है। ये लास्ट क्वार्टर का जो डेटा है। सो इसके जबकि स्पाइसजेट का पिछले साल भी देख सकते हैं कि उन्होंने 560 करोड़ का लॉस उन्होंने उनके बुक्स में दिखाया था। तो नेट नेट इसमें उनके फिगर्स लॉस में ही आ रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक शायद आने वाले दिनों में प्रेशर में देख सकते प्रेशर बन सकता है। सो इसमें तो बाउंस में या फिर ज्यादा पोजिशंस नहीं रखने चाहिए। सो कॉशियस व्यू है स्पाइसजेट के ऊपर। एनएमडीसी के ऊपर अगला अपडेट है। एनएमडीसी के उनका भी नंबर्स में 62% का फॉल आया। ओवरऑल नेट प्रॉफिट उनका 855 करोड़ का उन्होंने बताया हुआ है। उनके जो ऑर्डर बुक है वो 22,339 करोड़ का जो ऑर्डर बुक्स है। तो ओवरऑल ओवरऑल शायद फ्लैट न्यूज है ये। तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज या फिर थोड़ा सा नेगेटिव बायस आपको शायद देखने मिल सकता है। एमटीएनएल के भी नंबर्स हमने देखे। एमटीएनएल ने भी लॉस डिक्लेयर किया है 737 करोड़। ये पिछला क्वार्टर का है। और इसके अगर यही फिगर्स आप लास्ट ईयर भी देखोगे तो उन्होंने 653 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया था। तो नॉर्मली ये जो पीएसयू में बेसिकली एमटीएनएल है जो लॉस पे लॉस दिखाते जा रहा है। सो डेफिनेटली ज्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं है काउंटर में। किसी का पोजीशन है तो कॉशियस व्यू रखिए। भारत फोर्ज के भी नंबर्स आए हैं। तो Q2 के प्रॉफिट्स में ड्रॉप हुआ 67.28% ईयर ऑन ईयर, जो कि 141 करोड़ है। हालांकि थोड़ा सा रेवेन्यू में जंप देखा गया बट देन ओवरऑल प्रॉफिट ड्रॉप होने की वजह से शायद थोड़ा सा काउंटर प्रेशर में देख सकते हो। इसके अलावा हमने पेटीएम में एक अपडेट है। पेटीएम का एक न्यूज आया कि उन्होंने उनका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है। लोन बुक्स भी उनके जो 5 इयर्स के एवरेज के हिसाब से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो लोन बुक्स वगैरह ज्यादा ग्रो होने की वजह से हो सकता है कि पेटीएम में आपको थोड़ा सा मोमेंटम और थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स रेवेन्यू का जो डेटा है वो 3.5 लाख करोड़ तक का टैक्स रेवेन्यू जंप देखने को मिला है। सो ये एक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग डेटा हमको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहा है। सो और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेसिफिक न्यूज है जहाँ पे उन्होंने उनका जो टर्म डिपॉजिट जो रेट है वो 100 बिप्स पॉइंट से इंक्रीज किया है। सो अब जो डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट है जो वो बढ़े हैं तो शायद उनको डिपॉजिट्स के इनफ्लो के थोड़े ज्यादा इनपुट्स देखने को मिल सकते हैं। लास्टली ये गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम में उन्होंने बताया है कि जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग है जो इंडिया में काफी स्लो देखा गया है। सो ज्यादातर पोर्शन आपको कंटेनर्स के जो भी बिजनेसेस है वो चाइना से आते हैं। तो गवर्नमेंट शायद पीएलआई स्कीम इसमें लॉन्च करेगी तो प्रमोट करे ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रमोट करने के लिए। तो ये कंटेनर रिलेटेड जैसे स्टॉक्स के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। सो ये कुछ न्यूज़ थे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे। थैंक यू ऑल।